अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा मेकअप है वो मेरी फ्रेंड है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं यूएई में। तो उन्होंने क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक मुझे दिया है। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी इन्हीं का मेकअप लुक है। आप जाएं और वो प्रीवियस वीडियो भी देखें। लिंक जो है वो मैं उनका इंस्टाग्राम, इफ़ यू वांट टू सी हर वर्क आई विल पुट हर इंस्टाग्राम लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जाएं, उनको फॉलो करें, उनका काम देखें। और मेरे चैनल पे उनकी जो है मेकअप की वीडियोस जो हैं वो मैं डालती रहूँगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ फॉर ऑल स्किन टाइप। उसके बाद जो है वो शी इज़ यूजिंग कंसीलर। इट्स निक्स कंसीलर, जिसे NYX भी कहते हैं। So she will conceal my both eyes. Actually, she's a professional makeup artist, so her makeup style is different than me. She's doing both the eye makeup together. So she will conceal first, and then I will show you the concealer also. Which concealer we use? This is the concealer, and this is the eyeshadow. This is water eyeshadow kit. The name is called Cheetah, I think. I don't know how to pronounce, so I'm not familiar with this brand. This is her makeup kit, so but very nice. This is all water based color she's using with water. That's why the pigment is very good for the eyeshadows. See, it's a shimmery white. She always start with this white. Okay, this is another color for the crease cut. It's a brown shade from the same palette. It's called GITV. I really don't know about this brand, but very nice. This brand is very good. So she will cut the crease with this brown eyeshadow. If you like her makeup, you can follow her on Instagram. She's having Instagram. I will put the link below. Okay, now she's blending the brown shade. This is basically curve, This is she will give the wing. This crease cut. It's wing crease cut look. Actually, I give her that challenge to give me this look because I love crease cut wings look. Okay, now she's applying the white shimmer, the same shimmery white shadow, and then a liner, white shimmery liner. This is one local brand. I don't know the name of the brand. Okay, now she's making the wing with the brown eyeshadow, like liner, Okay, तो मिडल में भी एक लाइन है, ग्रीन कलर विंग इन द मिडल. सो टोटली जो है वो 3 कलर्स यूज़ किए हैं, ब्राउन, वाइट एंड ग्रीन. तो ग्रीन कलर जो है वो बिल्कुल मिडल में है उसका विंग. एंड नाउ शी इज़ मेकिंग माई आईब्रोज़ जो है वो आईब्रोज़ के लिए एनास्तासिया का जेल जो मैं अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ वही सेम जेल शी इज़ यूजिंग. तो आई मेकअप इज़ डन. नाउ शी इज़ यूजिंग
NYX foundation. This is stick foundation. She's blending. And then she will apply Ben Y Color Cake Makeup foundation. This is powder foundation. ये पानी के साथ जो है वो फाउंडेशन यूज़ करते हैं. एक्चुअली जितना भी मेकअप ये यूज़ करती हैं वो सारा जो है वो वाटर बेस्ड मेकअप. इवन आई शेडोज़ और फाउंडेशन और कॉन्टूर सब जो है वो स्पंज ब्रश को वेट करके वो यूज़ करती हैं. शी इज़ contouring my face because the foundation is very white on my face, so she will merge with this brown to give me a natural look. Nose contour. ओके अभी जो है वो अंडर आई वाटर लाइन पे भी ब्राउन आई शेडो यूज़ किया है. जस्ट वन कलर ओनली ब्राउन, द सेम कलर जो क्रीज के लिए यूज़ किया है. She give little wing also. अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है. ये लाइट ब्राउन कलर का ब्लश ऑन यूज़ किया है. यू कैन सी बहुत लाइट से ब्राउन कलर है, लाइक स्किन एंड लाइट कलर, लाइक ब्राउन सा. आई लैशेस भी लगा ली हैं. I'm almost done. Okay, highlighter she is using same white water based color as highlighter also. सेम कलर जो मेरे आईज पे यूज़ किया है आफ्टर कंसीलर. ये है लिप पेंसिल फॉरएवर 21 की कलर पिंक शेड. तो इसको आप जो है वो लिपस्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो. इट्स मैट एंड सॉफ्ट. Little bit more highlighter, white highlighter. Eyes पे भी
और थोड़ा सा आईज के नीचे वाले एरिया को, टू गिव लाइक ग्लैमरस मॉडल shimmery look. Okay, now she's making my hairstyle, also very different hairstyle. तो अगर आप ऐसे ही नए नए मेकअप स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and do share also. Thank you so much for watching. You can also follow me on Instagram and her also. I will put the both link below in the description box. Thank you.